Good evening, viewers, and welcome to Hornbill TV's Prime Time. First, the headlines. The Supreme Court on Friday refused to entertain RJD Chief Lalu Prasad Yadav's plea seeking stay on trial court proceedings in the CBI's Land for Jobs case linked to appointments made during his tenure as Railway Minister between 2004 and 2009. Prime Minister Narendra Modi, while highlighting the developmental works undertaken over the last 10 years in the state, criticized the opposition Congress for an RJD for revenge politics during UPA rule. The Supreme Court of India on Friday adjourned a hearing in the Nimisha case to August 14th and noted that the government of India is doing whatever it utmost possible under the given circumstances. Emphasizing that the Indian government has increased the budget for sports in the last 10 years and the entire sports system has been transformed, the Union Minister said that the government is also preparing for the 2036 Olympic Games. Those were the top headlines, and now for the news in details. First off, the Supreme Court on Friday refused to entertain RJD Chief Lalu Prasad Yadav's plea seeking a stay on trial court proceedings in the CBI's Land for Jobs case, linked to appointments made during his tenure as Railway Minister between 2004 and 2009. A bench comprising Justices M. Sundaresh and N. Koteshwar Singh said that Yadav should argue his main petition for quashing the CBI charge sheets before the Delhi High Court, which is also hearing the matter. The Apex Court, however, remarked that the Lalu Prasad Yadav's case can be exempted from personal appearance before the trial court, given the circumstances. The Apex Court also said that Delhi High Court will decide on the RJD Supremo's plea to quash the CBI charge sheet. The case, registered by the CBI in May 2022, alleges that Group D appointments in the West Central Railway were made in exchange for land parcels transferred to Yadav's family or close associates. The former Bihar Chief Minister has termed the case politically motivated and argued that the probe was launched without mandatory sanction under Section 17A of the Prevention of Corruption Act. Yadav has claimed that the investigation is an abuse of process aimed at harassing him through a jurisdictional error rooted in regime revenge. Lalu Prasad, through senior advocate Kapil Sibal, argued against the legitimacy of the CBI proceedings, citing the absence of a mandatory prior approval under Section 17A of the Prevention of Corruption Act. The Delhi High Court is set to hear further arguments on the plea to quash the FIR on August 12. Emphasizing that the Indian government has increased the budget for the sports in the last 10 years, the Union Minister said that the government is also preparing for the 2036 Olympic Games. Addressing the Indian contingent of 21st World Police and Fire Games in the national capital, the Union Home Minister said sports has been given a lot of importance. The government has increased its budget 5 times. The government is also preparing for the 2036 Olympic Games and is giving assistance of ₹50,000 per month to about 3,000 players and is also making a detailed, systematic plan for this. As India is set to host the 22nd World Police and Fire Games in Gujarat in 2029, Shah has set a goal for the police forces to aim for at least 3 medals and break their current record in the next Games. हमारे देश में खेलों को विगत 10 साल के अंदर बहुत महत्व दिया गया है। इसके बजट में लगभग 5 गुना हमने बढ़ोतरी की है। ढेर सारे नए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी काम किया है। टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसके तहत हम लगभग 3000 खिलाड़ियों को आज से ही 36 की तैयारी के लिए 50,000 रुपया प्रति माह देकर उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। फिट इंडिया मूवमेंट्स में सभी खिलाड़ियों को चयन करने की प्रक्रिया हमने आगे ली है और इसका परिणाम भी आया है। चाहे ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो, एशियाड खेल हो,
हमें मिलने वाले पदकों की संख्या 3 गुना बढ़ेगी। परंतु एक लंबी प्रक्रिया है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि 2036 में जब भारत में ओलंपिक खेला जाएगा तो भारत 1 से 5 की तालिका में होगा। जो आज 15 तक हमारा नंबर नहीं है, वो 1 से 5 में आएगा। और ओलंपिक का उपयोग कर खेल की उत्कृष्टता को सस्टेन तरीके से मेंटेन करने के लिए भी मैं भी इंटरेस्ट ले रहा हूं, हमारे खेल मंत्री ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। एक कार्य योजना बना रहे हैं कि 36 के बाद ये तालिका में हम ऊपर ही जाए, कभी नीचे ना आए। इसके लिए खेलों को गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था, हर खेल में कितनी आयु वर्ग के बच्चे को सिलेक्ट करना, इसकी ट्रेनिंग कब शुरू कर देना, ये सारा वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये कोई सिद्धि बताने का फॉर्म नहीं है, सरकार के प्रयास का वर्णन करने का भी फॉर्म नहीं। अगर आप सब खेलते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि खेल के लिए इस देश में एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट बन रहा है, बहुत अच्छा आपको मंच मिलने वाला है। और जब आप खेलना बंद करोगे, खेलना तो स्वभाव होता है, व्यक्ति जीवन तक खेलता रहता है, मगर प्रोफेशनली खेलना बंद करोगे तब भी कोच के लिए आपके पास अपार संभावनाएं जनरेट करने का काम भारत सरकार करे। A case has been registered against NCP-SCP leader Jitendra Auhat for allegedly obstructing the work of police, Mumbai police said on Friday. The development followed a scuffle between BJP and NCP-SCP workers at the Maharashtra Vidhan Bhavan on Thursday evening. The case has been registered at the Marine Drive police station in Mumbai, police said. Mumbai police said in a statement yesterday, after a fight between BJP and NCP and workers at Vidhan Bhavan, Jitendra Auhat and his workers obstructed the work by sitting in front of the police vehicle in the evening. Considering the seriousness of the matter, a case has been registered against Jitendra Auhat, quoted. Earlier on July 17th, a clash broke out between supporters of BJP MLA Gopi Chand Padalkar and Jitendra Auhat outside the Maharashtra Legislative Assembly. Nationalist Congress Party Sharad Chandra Pawar SCP MLA Rohit Pawar, speaking on the clash, said that these kinds of incidents would lead to distrust among the people of the state. Pawar alleged that the 4 people had planned to attack the NCP-SCP MLA who received threats on WhatsApp from the workers of the new ACA. The new ACA gives signals from a distance, and these 4 goons committed hooliganism there. Following the incident, Jitendra Auhat alleged that he was abused and threatened with death by individuals he described as goons who confronted him outside the assembly. Those on the Vidhan Bhavan clash will now take a short break. Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
Welcome back. Heading on to the next news. Highlighting the developmental works undertaken over the last 10 years in the state, Prime Minister Narendra Modi emphasized that transforming Bihar into a developed state is necessary to advance Eastern India. Prime Minister Narendra Modi said that the government are working for the welfare of the backward classes, and it shows in the schemes. NDA's mission is to prioritize every backward class. NDA developed the backward villages in Bihar that were neglected, and now they are the first villages of the country. Addressing a rally in Bihar's Motihari, Prime Minister Modi further criticized the opposition Congress and RJD for revenge politics during UPA rule. Prime Minister Modi stated in Bihar, which will go to polls later this year, that when the Congress and RJD government were at the centre, Bihar received only around 2 lakh crore rupees during the 10 years of UPA. In other words, these people were taking revenge on Nitish government. Quoted, in 2014, you gave me the opportunity to serve at the centre. After coming to the centre, I also put an end to old politics of taking revenge on Bihar. In the last 10 years, during the 10 years of NDA, the amount given for Bihar's development is many times more than before. PM Modi stated in Bihar, which will go to polls later this year. जब हम कहते हैं कि हम पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, तो ये हमारी नीतियों में भी, निर्णयों में भी नजर आता है। एनडीए सरकार का तो मिशन ही है हर पिछड़े को प्राथमिकता, हर पिछड़े को प्राथमिकता, चाहे पिछड़ा क्षेत्र हो या पिछड़ा वर्ग हो, हमारी सरकार की वो पहली प्राथमिकता है। दशकों तक हमारे देश में 110 से ज्यादा जिलों को पिछड़ा कहकर छोड़ दिया गया था। वो जाने, उनका नसीब जाने, ये हाल कर दिया था। हमने इन जिलों को प्राथमिकता दी, पिछड़े जिले के बजाय उन्हें आकांक्षी जिला बनाकर इनका विकास किया, यानी पिछड़े को और हमने नाम ही, व्याख्या ही बदल दी। वो आखिरी और आरजेडी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन बराबरी का अधिकार तो दूर, ये परिवार से बाहर के लोगों को सम्मान तक नहीं देते। इन लोगों का अहंकार आज पूरा बिहार देख रहा है। हमें बिहार को इनकी बुरी नीयत से बचाकर रखना है। नीतीश जी की टीम ने, बीजेपी की टीम ने और पूरे एनडीए ने इतने वर्षों तक यहां मेहनत की है। श्री चंद्रमोहन राय जी जैसे विभूतियों ने हमें मार्गदर्शन दिया है। हमें मिलकर बिहार के विकास के इन प्रयासों को और गति देनी है। हमें मिलकर बिहार के सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ना है। हमें संकल्प लेना है, बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। Heading on to the next news, the Supreme Court on India on Friday adjourned a hearing in Nimisha Priya's case to August 14th, giving more time for diplomatic and legal efforts to prevent the execution of the Indian nurse, who remains on death row in Yemen. The postponement follows a reprieve from her scheduled execution on July 16th after Indian officials intervened. During the proceedings, the bench comprising Justice Vikramnath and Sandeep Mehta noted that the government of India is doing whatever is utmost possible under the given circumstances. Attorney General R.
Venkataramani told the court that India has reached a furthest point it can diplomatically, given the complex situation in Yemen, a country deeply affected by civil unrest and geopolitical conflict. The petitioner informed the court that the immediate priority is to secure a pardon, after which the issue of diyat or blood money can be considered. However, earlier efforts to pay compensation to the victim's family reportedly ran into complications, delaying negotiations. The Nimisha case was listed as item number 29 before Honorable Court number 3. But morning, Leonard Attorney General mentioned the matter at 10:30 before the court number before Justice Vikram Nath, and he was making a request. He made a request that like the matter should be accommodated for a 3 weeks time, as there is already a stay in the execution of Ms. Nimisha. So from the petitioner side, we have made a request to the Honorable Supreme Court that we are intent to send a delegation to Yemen for the further negotiations. We means the petitioner organization, the representatives of petitioner organization, as well as the representatives of this Kandapuram Abubakar Musliar, who is leading the blood money negotiations in Yemen. Two representatives from the petitioner organization and two representatives from the Marcus of Honorable this Kandapuram Abubakar Musliar. And today, then the court agreed to that our submission, and court directed the Union government, the government of India, to consider our request. So the court directed us to make a representation before the Honorable before the Union of India, and when we are making a request, the government of India has to consider that positively. आज सुप्रीम कोर्ट में निमिषा प्रिया केस में सुनवाई हो गई और लेनेट अटॉर्नी जनरल ने आज एक 3 वीक्स का अकोमोडेशन के लिए टाइम मांग रहा था। फिर हमने ये रिक्वेस्ट दिया है, अभी ये रिक्वेस्ट कोर्ट के सामने रखा है कि एक डेलीगेशन भेजने के लिए अभी 6 मेंबर का डेलीगेशन के लिए हमने कोर्ट को बोला है। 2 मेंबर्स फ्रॉम द पिटिशनर ऑर्गेनाइजेशन निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल, 2 मेंबर्स फ्रॉम मार्कस ऑफ कांतापुरम अबूबकर मुस्लियार एंड 2 मेंबर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें और ये डेलीगेशन जाके उधर ब्लड मनी नेगोशिएशन फैमिली के साथ करने के लिए हम सोच रहे हैं। फिर कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है हमें सरकार को अप्रोच करने के लिए, और अभी यमन जाने के लिए ट्रैवल बैन है और सरकार को अप्रोच करने के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। जब हम ये ऐसे एप्लीकेशन सरकार के पास रखेंगे वो पॉजिटिवली कंसिडर करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है। We'll now take a short break. Stay tuned. Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. Welcome back. The Enforcement Directorate on Thursday filed a charge sheet against Congress MP Priyanka Gandhi Vadra's husband, businessman Robert Vadra, in connection with a money laundering case related to a 3.53-acre land deal in Shukhopur village in Gurugram, Haryana in 2008. This is the first time any probe agency has filed a prosecution complaint against Vadra, who is booked under the provision of the Prevention of Money Laundering Act. He was questioned by the ED for 3 consecutive days in April. Rahul Gandhi meanwhile criticized BJP-led central government for ED's charge sheet naming Robert Vadra, and he stated that his brother-in-law has been hounded by this government for the last 10 years.
Union Minister Ravneet Singh Bittu said on Friday agencies have been investigating for the last 11 years. He claimed that there was no corner of the world where Robert Vadra does not have a house or land. देखो मैं समझदा जे मैनू तुसी सच्ची गल पुछो तो 14 ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਈ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਸਾਹਿਬ 14 ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 25 ਅੱਜ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕੋਈ ਖੜਾ ਕਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 14 ਚ ਹੀ ਵਾਡਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਡਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਇਸ ਕਰਕੇ 11 ਸਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁਣ ਉਹ ਟੂ ਕੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਦਛ ਲਈ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਈਡੀ ਕੱਢੇਗੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ Those are all the updates for now. Stay tuned for more and keep watching Hornbill TV. The Jawaharlal Nehru National